session. Today in this session, we'll be solving more numericals. So let us get started. A T-section beam having flange 160 mm wide and 20 mm thick and wave 180 mm long and 20 mm thick carries UDL of 500 kN per meter over an effective span of 8 meters. Calculate the maximum stress induced due to bending. Also draw a bending stress diagram. Now here we have a T-section. So this T-section comes in a unsymmetrical section, right? So for unsymmetrical section, let us see how we can draw a bending stress diagram and find its maximum stress induced in the T-section, in this section. So let us get started. For this numerical, a T-section is given, and I have drawn the T-section there, and for this it is saying that it carries a UDL of 500 kN per meter over an effective span of 8 meter. Okay, so this is a again case of a simply supported beam. So simply supported beam carries a UDL of 500 kN meter over the entire span, and the length of this span is 8 meters. Okay, up यहाँ से we also again need to find maximum stress induced due to bending. So maximum stress induced will be in a compression zone, right? So as you can see in this diagram, this is a T-section. So T-sections, they come in a unsymmetrical sections. So unsymmetrical section के लिए, let's see how we can find the maximum stress. So formula will remain same. Sigma from flexural formula, sigma is equals to m by I into y, यही रहेंगे. ओके, बट जब आप टेंशन जोन पे स्ट्रेस फाइंड करते हो तो वहाँ पर सिग्मा विल बी सिग्मा टी m by I into y t. ओके, और जैसे एंड यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर आएंगे. ओके, and if you want to find stress in compression zone, it will be equal to m by I into yc. This will be the formula. Now for all this, moment and I remain same. सिर्फ ये y का ही वैल्यू अलग अलग होंगे दोनों पे ही. तो y यहाँ पर yt कहाँ पर होंगे? compression zone. Tension zone will be at this point which is below neutral axis line. So ये point will be yt, और ये ऊपर का जो ये लाइन है यहाँ से ऊपर का it will be yc. Okay, तो let's see how we can find moment first. So maximum bending moment for this simply supported beam carrying a UDL will be equal to WL square by 8. So W कितना है? 500 into L is 8 meter, its square divided by 8. So from here you get 4000 kilonewton meter. अभी kilonewton meter को न्यूटन पे और मीटर को mm पे कन्वर्ट किया तो it will be 4000 into 10 raised to power 6 Newton dot mm. So this is the maximum bending moment. Now we need to find y bar. हमने y bar यूनिट 1 पे कैसे फाइंड किया था? We found it as a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. ऐसे फाइंड किया था. अब यहाँ पर I'm taking this section as section 1 and this section as section 2. Okay, so if I take it as this section 1 and this section 2, then for this section 1, what is the area? Area is 20 into ये यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना है? 180. So area is 20 into 180 into
y1 कितना आएंगे, इसका आधा, ये पूरा डेप्थ इज 180, सो 180 डिवाइडेड बाय 2 इज y1, राइट, प्लस एरिया 2 सेक्शन 2 के लिए कितना है 20 इंटू 160 इंटू, अब आपको इसके आधा तक, ये पॉइंट तक फाइंड करना है, यहाँ तक, राइट। तो कहाँ से आएंगे आप, ये पॉइंट नीचे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। y1 will be equal to from this point on, y2 I mean sorry, y2 will be equal to from here till this point here. So कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, it is 180 प्लस, अब इसका आधा, पूरा डेप्थ इज 20, अब इसका आधा लिया तो इट विल बी 20/2 ये होंगे, राइट। सो डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2। अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो तो यू विल गेट y बार इज इक्वल टू 137.06 mm, ओके। अब जो ये y बार है, y बार हेयर इज इक्वल्स टू yt, ओके। तो यहाँ पर आपका y बार इज इक्वल टू yt आपको 137.06 mm you will get. Now how much will be yc? Yc you can find it as yc will be equal to total depth of this T section is 180 plus 20. 180 plus 20 is 200. So 200 minus yt is 137.06. So from here you will get 62.94 mm. Okay. So yc is equals to 62.94 mm. Okay. Now from you have found value of y also. Now I. How will you find I? Moment of inertia about I x axis. तो आपको ये फाइंड करने के लिए you need to use a parallel axis theorem. तो this is my first axis, first section here. तो इसके लिए क्या होगा, it will be BD cube by 12 plus A1 H1 square. This is for the first section plus BD cube by 12 plus A2 H2 square, ये होगा, राइट। अब यहाँ से B and D for this section 1 is equal to, B कितना है 180, D कितना है, B is 20, D is 180. So you have B into D cube by 12 plus area will be 20 into 180 into H. H कितना होगा, अब हम H यहाँ पर यहाँ के फाइंड कर रहे हैं, तो हमने yt कितना मिला, हम नीचे का सेक्शन 1 के फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर yt वॉज इक्वल टू 137.06 और इसके आधा कितना होगा, ये सेक्शन के सिर्फ आधा कितना होगा, इट विल बी 90, राइट। सो यू गेट 137.06 minus here to find h1 it is equals to yt minus y1, right। तो y1 कितना आया था, कितना आएंगे y1, यहाँ पर y1 180 डिवाइडेड बाई 2 लिया था, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90, राइट। सो ये y1 हुआ स्क्वायर प्लस सेकेंड का आप हम ये वाला इसका करेंगे, तो इस पे ये सेक्शन पे देखो नाउ, इसका b कितना है, b is 160, d 20. So I have here 160 into 20 cube divided by 12 plus area will be 160 into 20 into, अब इसका h स्क्वायर कितना होंगे, h स्क्वायर विल बी, आपको पता है कि यहाँ पर yc आपको सिर्फ अब ऊपर का, हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जोन पे दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस yc कितना मिला था, 62.94 मिला था। सो वी हैव
94 माइनस, अब यहाँ पर जो हम y1 लेते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस yc डिस्टेंस लिया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो ये y2 के लिए सिर्फ हम इसका इतना आधा ही लेंगे, इतना पोर्शन ही लेंगे सिर्फ। ओके, ये पोर्शन के लिए, फर्स्ट पोर्शन के लिए सिर्फ हमने ये पोर्शन लिया था y1 जब हम यहाँ पर ix फाइंड कर रहे हैं। अब सेकंड के लिए जब हम y2 फाइंड करेंगे सिर्फ हम इतना ही लेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर तक नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम यहाँ से yc से माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। सो वी हैव -10 square. So from here you will get Ixx equals to, Ixx will come equal to 2.6767 into 10 raised to power 7 mm raised to power 4. So this is the moment about Ixx axis. Okay, so now since we have found moment about Ixx axis, we can find the stress induced in compression as well as in tension, right? So let us find. So first find stress in tension zone. Stress in tension zone will be equal to m, कितना मिला है, m we got 4000 into 10 raised to power 6 divided by I is equals to 2.6767 into 10 raised to power 7 into y. अब यहाँ पर y जो लेंगे हम yt लेंगे, तो yt कितना आया, yt is equals to 137.06. So from here you will get sigma t will be coming equal to, I'll write it here, 20481.32 Newton per mm square. Okay, so this is stress induced in tension zone. Now stress induced in compression zone will be equal to, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इस पे m कितना है, m will remain same 4000 into 10 raised to power 6, I भी सेम होगा 2.6767 into 10 raised to power 7 into yc कितना मिला था, yc 62.94। तो यहाँ से आपको स्ट्रेस इन कंप्रेशन आपको मिलेगा 9405.33 Newton per mm square. Now you were asked only to find maximum stress induced. So this is the maximum stress induced. Okay, so if you draw the stress distribution diagram here, it will come यहाँ पर this is your sigma t, okay, and here it is sigma c. So sigma t is equals to this much and sigma c is equal to this much. Okay, so we just shade this one to come something like this, the diagram. Okay, so I hope this numerical is clear. Now let us solve the second numerical. Let's solve the second numerical. Again we have a T section having flange 180 mm wide and 20 mm thick, and wave 150 mm long and 20 mm thick, carries UDL of 80 kN per meter over an effective span of 8 meter. Calculate the maximum bending stress. So similarly जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. So let us get started. This is also a similar question. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, ये भी वैसे ही सॉल्व करना है. Only the values have changed. So let's see how we can solve this one. So this is also a simply supported beam. It is simply supported beam, and the length of the beam given in the question is 8 meter. 8 meter, right? And it has a UDL running over the entire span, and the intensity of this UDL is 80 kilonewton per meter. So I'll name this as A and B.
Now यहाँ से from flexural formula again I need to find stresses. So again here I need to find maximum bending stress. So sigma T will be equal to M by I into YT. यही फाइंड करना है आपको, राइट? ये हेयर आपका मैक्सिमम आएंगे. अगर आप मिनिमम फाइंड करना चाहते हो तो कंप्रेशन जोन पे आएंगे, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा C इक्वल्स टू M by I into YC. ये होंगे. सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, राइट? अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूरियल कैरी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल कम एट WL स्क्वायर बाय 8. सो W कितना है 80, L is 8 square by 8. This will give you 640 kilonewton मीटर. ओके, अब ये आप किलो न्यूटन को न्यूटन पे कन्वर्ट करेंगे और मीटर को mm पे कन्वर्ट करेंगे, तो यू गेट 640 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन डॉट mm, ये मिलेगा. नाउ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे फाइंड किया वैसे हम y बार फाइंड करेंगे. y बार here will be equal to yt which will be equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. ये होगा. अब मैं यहाँ पर अगेन आई एम टेकिंग दिस सेक्शन एस 1, दिस सेक्शन एस सेक्शन 2. ओके, तो फिर मेरा एरिया 1 फॉर दिस सेक्शन 1 कितना होंगे? इट विल बी 20 इंटू 150 इंटू y1 कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 2, 150 डिवाइडेड बाई 2, राइट? प्लस a2 कितना होंगे यहाँ पर? एरिया 2 विल बी 20 इंटू 180 इंटू, नाउ y2 यहाँ तक आना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक 180 है, सो 180 प्लस, अब इसका आधा कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज योर y2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इज 20 इंटू 150 प्लस 20 इंटू 180. सो यहाँ से आपको y बार या yt विल बी कमिंग इक्वल टू 121.36 mm. ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो है yt इट इज़ कमिंग इक्वल टू 121.36 mm. अब ये y यहाँ से यहाँ तक yc जो है वो कितना आएंगे? yc, सो yc विल बी इक्वल टू, टोटल डेप्थ कितना है? 150 प्लस 20, 170, 170 माइनस 121.36 will be giving you 48.64 mm. So you got both the values which is yc and yt, दोनों ही आपको मिल गया. Now what is remaining? I is remaining. So how will you find I? Moment of inertia I. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकेंड सेक्शन के लिए BD क्यूब बाई 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर. ये होगा, राइट? नाउ आई विल सॉल्व इट फर्दर हियर. दिस इज अलोंग XX डायरेक्शन. ओके, सो फ्रॉम हियर IXX BT कितना होगा फॉर फर्स्ट सेक्शन? B इज 20, D इज 150 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना होगा? 20 इंटू 150 इंटू H कितना होगा? H1 विल बी YT माइनस हाफ ऑफ दिस सेक्शन, तो YT इज 121.36 माइनस हाफ द सेक्शन. 150 का हाफ कितना होगा? 75 स्क्वायर, राइट? प्लस सेकेंड सेक्शन के लिए, सेकेंड सेक्शन के लिए B कितना है? सेकेंड सेक्शन के लिए B इज 180, D इज 20 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया विल बी 180 इंटू 20 इंटू
अब यहाँ का आपको सिर्फ यहाँ का डिस्टेंस इतना ही लेना है, राइट। तो वाई सी माइनस ये y1 करेंगे तो कितना होगा, वाई सी कितना मिला आपको, वाई सी 48.64। सो 48.64 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, हाफ ही लेना है इसका सेक्शन, हाफ इतना ही लेना है। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10 square. So from here you will be getting Ixx will be coming equal to 17.56 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Okay, now from here let's find sigma t and sigma c. पहले हम मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करेंगे which will be m कितना मिला था, m 640 into 10 raised to power 6 divided by I 17.56 into 10 raised to power 6 into yt. yt कितना मिला है, 121.36 ये आएंगे। yt from here will be coming equal to 4423.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। से ये हुआ आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, अब आप मिनिमम फाइंड करते हो सिग्मा सी विल बी इक्वल टू अगेन 640 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 17.56 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 इंटू वाई सी लेंगे आप, जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर वाई सी मिला है ना, वाई सी कितना मिला है 48.64। सो वाई सी विल बी कमिंग इक्वल टू 1778.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस आर द स्ट्रेसेस। अब ये स्ट्रेसेस से हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट डायग्राम इन दिस मैनर। सो यहाँ से यहाँ तक इट इज सिग्मा टी, राइट, ये पॉजिटिव पे आते हैं मैक्सिमम, राइट, तो यहाँ पर नेगेटिव पे आते हैं विच इज सिग्मा सी, स्ट्रेस इन compression, sigma c. So this one is a bending stress distribution diagram. Okay, so I hope this numerical is also clear. Now let us solve the last numerical for today's session. This is the last numerical for today's session. So we have a T section again of flange 160 mm into 20 mm and web 180 into 180 into 20 mm is simply supported at both the ends. It carries two concentrated loads of 100 kN each, acting at 2 meter distance from each support. Span of the beam is 8 meter. Determine the maximum bending stress induced in the beam and draw bending stress distribution diagram, and also find bending stress at the layer 100 mm from the bottom. Now यहाँ पर there is extra, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 पे फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है, और यहाँ पर उसके बाद 100 mm from the bottom, 100 mm from the bottom हमें bending stress फाइंड करना है. So let us see how we can solve this numerical. So this is again a case of a simply supported beam. So let us draw the diagram first. Simply supported beam, and it carries a 2-point loads at a distance 2 meter from each support, right? So 100 kN load है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 100 kN load from this support, यहाँ से यहाँ तक का distance 2 meter. And इसका total distance is given equal to 8 meter. Now यहाँ से again हमें maximum bending stress find करने के लिए बोला है, तो sigma c will be equal to m by I into yc. ये हमें कहाँ से मिला, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से मिला. अब यहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो मोमेंट फाइंड करना है तो वो कहाँ पर आएंगे, मैक्सिमम मोमेंट एट सी. अगर इफ आई नेम दिस पॉइंट एज सी एंड दिस पॉइंट एज डी, ए बी सी एंड डी, सो मैक्सिमम मोमेंट सी पे आएंगे, दूसरा डी पे आएंगे.
moment at D. So this will be coming equal to, here RA reaction will come 100 kilonewton, RB will come 100 kilonewton. I think by now you should know how to find reactions, and I'm hoping that you know how to find reactions. So मैं directly यहाँ पर इसका reaction जो आएंगे मैं यहाँ पर directly कर रही हूँ, solve नहीं कर रही हूँ. Okay, so if you need it, you need to solve it yourself in order to recheck it. So in this manner moment at C कितना आएंगे, and D पे it will be 2 into 100. Okay, so you will get 200 kilonewton meter. अब आप ये kilonewton meter को newton dot mm पे change करेंगे तो it will be 200 into 10 raised to power 6 newton dot mm. So this is the maximum bending moment. Now let's find the distance. Y bar will be equal to yt will be equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2, right? So यहाँ से I'm gonna take this is as one section, this as second section. So यहाँ से first section के area कितना होगा 180 into 20 और उसका y1 कितना होगा 180 divided by 2 plus second section के area कितना होगा 160 into 20 into y2 कितना भी लाई करेंगे, यहाँ तक जाना पड़ेगा from here till here. तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 180 है. So 180 plus 20 का आधा. So 180 plus 20 divided by 2 divided by area 1 plus area 2. Okay, so from here you will be getting yt equal to 137.05 mm from the base. Okay, so फिर आपके ये जो है it will be equal to yt will be equal to 137.05 mm. Okay, now यहाँ से yc find किया तो yc will be equal to total depth which is 180 plus 20 200 minus 137.05. So from here your yc will be 62.95 mm. Okay, so this depth from here to here is yc. Now we have found yc and yt दोनों ही हमें मिला है. Now let's find moment of inertia I. तो यहाँ पर we need to use parallel axis theorem. So for the first section it will be bd cubed by 12 plus a1 h1 square plus second section के लिए bd cubed by 12 plus a2 h2 square. Okay, so now if I solve this here ixx will be equal to first section के लिए b कितना है, b is 20, d is 180 cubed by 12 plus area will be 20 into 180 into how much is h will be equal to 137.05 minus इसका आधा 180 का आधा is 90 square plus for the second section how much is b is 160, d is 20 cubed by 12 plus area will be 160 into 20 into अब ऊपर के लिए सिर्फ यहाँ से मैं आई एम गोना यूज़ yc वैल्यू. सो अगर आपने yc यूज़ नहीं किया yt यूज़ किया तो आपको 137.05 माइनस जो आपने ये वैल्यू यहाँ पर y2 लिया है 180 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 190. सो 137.05 माइनस 190 होगा. बट आई एम नॉट यूजिंग दिस yt वैल्यू, आई एम यूजिंग yc. सो yc यूज़ किया तो yc इज 62.95 minus I only need to take the half of this step with this which is 10 divided by 2 is 20 divided by 2 is 10 square.
So from here you get Ixx equal to 2676784.3.15 mm raised to power 4. Now if you convert this as 26.76 into 10 raised to power, it will be 2, 4 and 6. So it will be 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Okay, now from here you are asked to find maximum bending stress, right? So to find this maximum bending stress, we get it at sigma t. तो इस पे we put it in this formula. M कितना मिला? M is equals to 200 into 10 raised to power 6 divided by I is equals to 26.76 into 10 raised to power 6 into YT is equals to 137.05. So from here you will be getting stress equal to 1024.06 Newton per mm square. Okay, ये मिलेगा आपको. Now in next you are asked to find bending stress at layer 100 mm below from the bottom. अब ये bottom से 100 mm below find करना है. तो ये कैसे find करेंगे? I'll solve it here. Okay, so sigma t below 100 mm will be m by I. अब ये जो yt है it will be at below 100 mm. So this will be coming equal to m कितना मिला? m आपको सेम रहेंगे 200 into 10 raised to power 6 divided by I is 26.76 into 10 raised to power 6 into now y. T will be equal to you got yt is equal to 137.05, or you need to find it at this t, right, at 100. So you need to deduct it. So 100, this will be your yt, which will be coming equal to 37.05. So from here you will be getting value equal to 276.899 Newton per mm square. So this will be stress at 100 mm below from the bottom. Now if you draw the bending stress distribution diagram, so here you have sigma t, right? And from this base you were asked to find stress at 100 mm above the base, right? So above this base at 100 mm, let us consider around here, यहाँ तक let us say base से यहाँ तक 100 mm पे है. तो at this point you got stress equal to कितना मिला? 276.899. So let us write 276.899 Newton per mm square. Stress आपको यहाँ पर इतना मिला. So you signify it in this manner. Okay, so this is, यहाँ पर you have sigma c and here is sigma t. This is a bending stress distribution diagram. Okay, so I hope this numerical is clear. I'll see you with more numerical in next session.